Good afternoon, sir. Good afternoon. NISHCHAL, please tell us about yourself. So my name is MITTAL. I am 23 years old. I am from Bayana, Bharatpur district of Rajasthan, where my schooling was done. My graduation is from Rajasthan University. My post-graduation is from Delhi School of Economics in 2022. Currently, I am working as an authorized officer in UBS. My interests are cooking and brisk walking. This is my first attempt at Indian Economic Service. Why do you want to join economic services? So, sir, first reason is that I want to work for the, I want to work in a job where I could contribute for the nation, first of all, nation building. Second is that I want to work in the field of economic advisory, where I can use my skills and my learnings, which I have done, like I got my during my Delhi School of Economics master's course. Here to derive the policy insights from the research and other kind of things. And I'm also interested in the economic administration and budget, the report writing and all. As you say, you want to contribute in nation building. So there are, giving your knowledge, graduate from Rajasthan and then postgraduate from Delhi School of Economics, you can contribute in nation building by becoming a professor or coming to the teaching. Yes, sure. That is also one of the way to contribute for the nation building. However, the interest for policy making and the economic advisory, that is actually draw me toward the Indian Economic Service job. So that is the reason. Have you tried for a higher education or not? Are you not interested in doing PhD? So PhD is on the card, but right now I do have many kind of interest. Like I do not have the narrow down all the interest areas. So I want to work in this field, and if I get successful to narrow down all the interest area, then I will definitely go for that. So higher education or PhD is in your plan? Yes, right now I'm not thinking that much about that, but can do. Okay, you are aware of devaluation. Why country recourse to devaluation? So, sir, devaluation is actually referred to the reducing exchange rate when it is fixed exchange rate regime. So, I think country goes toward the devaluation to increase the exports or to especially improve the export competitiveness of the domestic products. So, but now most of the countries are following flexible exchange rate. Does it have a relevance now? Devaluation. So, if we see the case of India, we have managed floating exchange rate. So it is possible, not that much, like we can't devalue our currency by very large amount, but it is possible that by selling, by actually buying some kind of dollars from the market, RBI can devalue RBI can depreciate or devalue our currency by some amount, but it will not be that much. So relevance has decreased over the time, but it is something which is helpful for a nation to increase their export competitiveness. But still, that is again, the argument is that first of all, during the flexible exchange rate, have you seen any country now as a policy using devaluation? Sir, I can't recall as of now. If I see my neighbor countries as well, like Pakistan and Sri Lanka, these countries are also having, I think, flexible exchange rate regime. So I'm not exactly aware of any country if is using the fixed exchange rate regime. Okay, then how do you see that this Marshall Lerner condition in context of devaluation? So the Marshall Lerner condition states that if our currency depreciates, then it can lead to improve our trade position, our trade surplus. So improve our trade deficit. So Marshall Lerner condition is all about that. So I don't think that it is related to the fixed exchange rate regime. Even if we are
able to depreciate our currency by some amount, then also we can have we can bring this Marshalling condition into the play. But yes, in the fixed exchange rate regime, it is more relevant because it becomes a policy tool for policymakers. What is Marshalling condition? Can it? Yes, so Marshalling condition states that if the sum of export elasticity and import elasticity, their sum of their absolute value is greater than 1, then if our currency gets depreciated, then it will lead to improve our trade deficit. Okay. So have you heard about the J curve? Yes, sir. What is that J curve? So the J curve is phenomena where it is seen that after the depreciation, whenever the currency is devalued or depreciated, the improvement in the trade surplus, trade deficit, is not just after immediately. Immediately after the depreciation or devaluation, first trade deficit position gets worsened for some time, like for short time interval. After a certain time period, then only our trade position gets improved. So first our trade deficit increases for some time period, then after some time period, our trade position gets improved. So this is the phenomena which is referred as a J curve. So J curve, if I want to plot J curve, what shall be on y-axis and x-axis? So on the y-axis, I think it will be trade position, whether the export minus imports we can take. So and on the x-axis it will be time. So export minus import, suppose say what? It declines. Net export. So generally if we are using any kind of devaluation tool, depreciation tool, then we are in the fourth quadrant. That means our net exports are negative, and then if we use the depreciation tool, then it actually converges to the horizontal axis. So that means net export declines when you take. Yes. So first they decline, then it's improved. After a lag of time, yes, then it will start. And what is impossibility trinity? So impossibility trinity in economics refers to the scenario where there are three conditions that can't be simultaneously satisfied. So one is actually the flexible exchange rate, then second is the independent monetary policy, and third refers to the perfect capital mobility. Mm-hmm. So all these three conditions can't simultaneously exist at the same point of time. And okay, is the Lewis theory of development is still relevant for Indian economy? So sir, Lewis theory talks about the transfer of the surplus labor from the traditional sector to modern sector. Industrial sector that we can take in our case. So sir, if we take the example in the case of India, if you want to check the relevance of it, then we will have to check whether this is true for India or not, like how much our labor from agriculture sector, that is our traditional sector, that has transferred to the modern sector. Now if we see the data points, we can see that between 1970s and 2011, our the share of labor in agriculture has decreased from 70% to 46%. However, if we see the data of 2022, like this time period, still it is around 45% only. However, sir, so this means that our transfer of labor is not happening at that much rate, first of all. And if we see the labor in manufacturing sector, particularly industry sector, it is stagnant around 25%. So it means that now it is coming, the transfer is not happening at very large rate. There can be many regions of it, but I think its relevance is very much limited in the case of India. So what is the lesson to be learned from this? So sir, I think... So that means, do you think that in terms of Lewis, that we are not developing? I don't think so, sir, because Lewis is just a theory. It is subject to some assumptions and limitations. And whatever theoretical perspective it gives, it is not necessary that in the real life we also see that perspective.
here if we see that our labor is not actually transferring from agriculture to industry and service, and the region we can say that the manufacturing is not getting that much growth and all, but we can see that inside the agriculture sector only, inside the rural economy, what we say we refer to the primary sector, inside that labor is getting transferred. We are having many kind of activities such as related to the logistic, warehousing. These activities are getting larger proportion. So I don't think that it is true that we are not developing, we are developing. But yeah, so this relevance of this story is limited in case of India. Do you believe that the agriculture productivity over the years, say after post-reform period, have increased in India? Agriculture productivity, sir? Sir, I'm not exactly aware of the data points, but I think after the Green Revolution in 1960s, then... I'm talking about post-reforms period. Yeah. Post-reform period, sir, I think on productivity front we have not done that much well, because we haven't seen any very large revolution respect to that. But if we see in the terms of the yield, the food yield and all, this is increasing every year, and so there's something can be due to many reasons. But I think on the productivity term in agriculture we are not doing that much. Is there any difference between yield and volume? Yes, sir. Yield is actually refers to. So I think what actually limited information. Yield refers to the generally for the total output for a particular area, or say it refers to the what exactly we are producing the output. Have you seen data on yield? It is per hectare. Yes, sir, per hectare. That's what I am. So that means it is a per hectare. If you are seeing it indirectly, you are looking into productivity. If it is increasing, then how can you say that agriculture is not growing? Productivity is not growing. So, sir, this productivity can be increasing the productivity can be of many reasons. For any region. For any region, that for is. Any region, say the total. If you are saying the total yield has increased, that means productivity has increased. Per year it is increasing. Then what does it indicate for the agriculture sector? Yes, so we can say that productivity is increasing, but I was actually... If you don't agree, please share with us what are the other indicators on the basis of which you can say that agriculture is not growing in India. So, sir, actually I was referring to the land productivity first, when I was saying the agriculture productivity not increasing. If the production per hectare is increasing, that is what is that? What is land productivity? You see, either you say yield, if yield is defined as we said, it's a output per hectare. Right, sir. So that is the productivity. How do you define land productivity? So the productivity is referred to, as you mentioned, the total output per area. So Per area is what? per unit of area. Per unit of Some area. unit. Right, sir. Right, sir. So I was actually... You are contradicting yourself. Okay, sir. Please correct yourself. Okay, sir. Go through it. So we can move to, okay, last, okay. According to Harrod-Dummer model now, suppose say the rate of growth depends on what? If you look into the Harrod-Dummer model, it is one of the basics model theory. The rate of growth depends on? It is depend on the saving rate and the growth rate of the investment. Yeah, so we refer to the capital accumulation actually. Capital output ratio. Right, sir. Capital output ratio. So if you see the Indian scenario, at what stage of this Harrod-Dummer model again is relevant, and why in terms of this capital output ratio and the level of saving, the rate of growth is not so impressive? Whether the saving has declined over the years in India, or whether the capital output ratio have been not improving? So, sir, if I see the saving rate, I think in the last 2 or 3 years only it has declined. Before that, I think it was doing good. Like we were doing good on the saving rate. It was stagnant around, it was around the 8 to 9%. However, in the last 2 years, we have, as per the recent data, we have come to 5.1% of the savings. So, if I talk about the capital output ratio, I think here we can see that the capital output ratio,
I do not have the exact data points, but what I can understand is that the capital output ratio, it is possible that we are not doing that, we are not increasing that much on that front. I am not exactly aware of the data point. It is possible that it is increasing, but I think in the saving rate also we are mostly stagnant. Our saving rates have not increased that much, so it is one of the possible reasons. But I think we have achieved the growth rate in the last 2 decades, and the relevance of heredom or model is also something which we need to see whether it is relevant or not. But yes, I think this can be the possible explanation. Are you aspiring for both the services, RBI Grade B and Indian Economic Service? Yes, sir. I am. You are qualified for both. Yes, the sir. Both. Written examination. Yes, sir. Okay. Suppose you are selected for both these services. What would be your preference? So, sir, I would want to go to, for Indian Economic Service because something I want to have the exposure of the fiscal policy first of all. And I want to work directly in the sync with the central government, and I have a good exposure. Like I am a little bit inclined towards the policy making and drawing out the recommendations for policy, and especially this economic administration work as well. So this is the reason why I would want to go for Indian Economic. How have you got the exposure towards the Indian Economic Service, fiscal policy as you mentioned? Yes, sir. So in my post graduation, I do have this. There were 2 or 3 courses which were there having some exposure of the fiscal policy related. One was public economics, and as in my post graduation course, we were actually explained, or we learned how to draw out the recommendation and how we can work on that. That is not a specific exposure. That way you have also got exposure towards macroeconomics, towards money banking, yes, sir. and finance, Yes, sir. Right. monetary policy. So you are equally fit for the Reserve Bank of India officer also. Yes, sir. But yes, sir. So I have got both exposure, but I want to use this. I want to work You for have to the. mention some specific reason, your interest for that. So my interest is mainly for the policy making. I want to work for the policy, for the area where I can draw out some recommendation out of it. First of all, second is that because the Indian Economic Service has a good exposure to fiscal policy, this is something which also is one of the factor which draw me for the Indian Economic Service. Suppose that you are selected as an Indian Economic Service officer, and now the budget is also going to be presented in the parliament. It is in the process of formulation, preparation of budget. And you are given the responsibility of highlight some key points regarding the past performance, 1-year performance of Indian economy and the way forward. So, in your opinion, what would be the way forward for Indian economy to ensure, or at least to promote, the economic growth side by side stability? Okay, sir. Can I take? Yeah. 3-4 important points, point-wise. Sure, sir. You are given a free hand Okay, sir. to give your input in the budget document. Okay, sir. So, sir, one area where we have done this year good on the front of the capital expenditure. So, one recommendation, one thing which I would want to mention will be about keeping that capital expenditure on a growth path and even increasing as a percentage of the GDP. This is essential. Capex. Yes, capex. Second, I would want to keep in the mind, on the budget path, is related to the inclusion of inclusive economy. First, the good term,
So inclusive economy in the terms of the financial inclusion, the social inclusion, so that all these social sector, all these marginalized sectors get that much amount. What specific steps would you take for capex? Which sector would be your priority Right. area? How would you promote the inclusive growth? Right, sir. Specific. So sir, for capex, I would want to provide that higher budget to railway, and our road ministry as well. Also for the particularly logistics sector, warehousing and all these kind of sector, where I will want to allocate large amount of that. For inclusive economy, I would want to say that this PM Ujjwala Yojana, PM Awas Yojana, all these things are working on very good terms, and I would want to allocate a larger amount of my money to that. Have you heard about DAY, Day NIR? Day NIR. Deen Dayal Awas Yojana, Antyodaya Yojana, dash National Rural Mission. Yes, sir, I have heard about that. This is about ensuring, like increasing the employment particularly, and ensuring some livelihood in the rural area. What are the key points of this scheme? So for the Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission, the key point is connecting the at least one female house from one household. One is that. The second is related to the providing some loans for self-employment activities. Third is that to reduce the poverty by providing some. Why was it recently in news, this scheme? So as per my limited information, I am not exactly aware of the. Have you heard of Sangathan se Samriddhi ki Or? Sangathan se Samriddhi ki Or. Sir, I have not heard of this. Please go through it. Okay, sir. ठीक है? Okay. Your formal interview is over. Okay, sir. Off the record. क्या वो finally? नहीं just I wanted to ask you a personal question. क्या वो joining हुआ बेटा तुम्हारा? सर वो नहीं मान रहे हैं. मैंने वो एप्लीकेशन उनको लिख के दिया था, वो उसका फॉर्म, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया है. मैंने मेल किया था उनको लास्ट वीक, तो वो नहीं मान रहे. सो आई डोंट नो, मतलब मुझे क्या करना चाहिए. नहीं मान रहे हैं क्या मतलब? क्या वो रिप्लाई नहीं दिया या रिफ्यूज किया? सर दे आर सेइंग कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट इस फाइनेंशियल ईयर के लिए. आपको रिप्लाई किया है मेल से? हाँ, मेल से रिप्लाई किया उन्होंने. कब किया लास्ट? आई थिंक थर्सडे को उन्होंने किया था. क्या कह रहे हैं? कि इस फाइनेंशियल ईयर के लेके आओ या फिर आप अपना ITR दो हमें. सो आई थिंक वो कुछ है. फिर मैंने इनको डीन को भी मेल किया था, डीन, जॉइंट डीन, रजिस्ट्रार, तीनों को. वो लास्ट फ्राइडे किया आफ्टर गेटिंग द रिप्लाई फ्रॉम. सो आई डोंट नो कि वो 30 तारीख तक कर पाएंगे रिप्लाई और नहीं. सो द रीज़न इज़ कि मैं लाइक वो पर्सनली जाके मिलना इज लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग फॉर मी. और आई थिंक वो डेट ES का आ चुका है 18th. सो You are a good candidate. Initially थोड़ा सा अति होता है. Someday you perform very well, someday you थोड़ा सा miss होता है. But you are perfectly fine, and there is no reason that you will not qualify. Right from your first interview, we have been watching you. ओके. हो सकता है someday it becomes low. तो सर आज थोड़ा सा वही किस टर्म्स में बट सर? आपका उससे जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो पोटेंशियलिटी है, उस पर कहीं गिरावट नहीं आई है. ओके. बट प्रेजेंटेशन पार्ट आज थोड़ा लग रहा था जैसे यू आर साउंडिंग लो, हल्का सा जैसे लग रहा है. ओके सर. हाँ, क्योंकि आवाज हमेशा थोड़ा टोन को मेंटेन करना है. ओके. आज बहुत कम धीरे बोल रहे हैं आप, जैसे लग रहा है जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है. थोड़ा सा कहीं डेविएशन है माइंड में. यू आर कुछ और सोच रहे हैं क्या? हाँ सर, लॉट ऑफ थिंग्स चल तो रही है. इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड ऑन योर फेस. ओके. ओके सर. योर फेस, योर रिस्पांस आल्सो. योर रिस्पांस, योर फेस. आप लग रहा है बहुत सारा चीज सोच रहे हो. वी आर टीचर्स, हमको पता लगता है. बच्चे को देखते हैं तो बड़ा गुड कैंडिडेट. हाँ, बहुत अच्छे कैंडिडेट हो बेटा. अभी डोंट डेविएट. अभी इट्स अ हाई टाइम एकदम फोकस. ओके सर. यू आर एकदम. व्हेन इज योर इंटरव्यू?
18th को है सर। 18 ठीक है, आरबीआई का डेटा भी आया नहीं। हाँ अभी तो नहीं आया है। तो ठीक है, एकदम हो फोकस एकदम रखो, अभी छोड़ दो, सारी चीज भूल जाओ। यू हैव अ वेरी 90% प्लस में हम देखते हैं तुम्हें। ओके सर। तो सर मतलब एग्जैक्टली थोड़ा सा आप समझा तो सकते हैं? बोला तो बेटा कि आज तो लो में हो ओके। प्रेजेंटेशन में तुम्हारा नॉलेज उस पर तो कोई डाउट ही नहीं है। यू आर, आज लगता है जैसे कि ना रिवाइज हुआ ना लो पे रह गए, मतलब सोच रहे हैं कुछ और, बोल रहे हैं कुछ और। सर यील्ड वाला सर मेरे को वो थोड़ा सा मेरे को नेवर मैटर्स, यील्ड का ही वही होता है, यील्ड इज आउटपुट पर है। आप सब पता You know everything. have a complete trust in you that you know the answer to the question, but due to some mental deviation you could not present it properly. ओके सर। ऐसा नहीं कि इतना सारा इकोनॉमिक्स आप पढ़ लिया 3 दिन से हम जान रहे हैं यार। से आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, आपको यील्ड नहीं मालूम होगा, पक्का पता होगा, Yes. बट यू कुड नॉट प्रेजेंट इट। ओके सर। ओके यील्ड और आउटपुट अंतर है ना। सर, आउटपुट पर है यील्ड। हाँ, right, आप sir. देखिएगा तो सर वो एक्चुअली मैं वो डेटा पॉइंट के थ्रू चला गया, तो आई थिंक वो उस सेंस में डेटा पॉइंट नहीं बोलना, डेटा पॉइंट नहीं बोलना अच्छा है। ओके स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। Statistics, okay. इकोनॉमिक्स। ओके सर। एंड सर क्योंकि मैं ईल्ड्स का बोल रहा था और मुझे लग रहा है कि शायद मैं क्योंकि गलत ही मिसअंडरस्टैंड कर गया उसको, तो ईल्ड शायद वो नहीं बढ़ रही है शायद मुझे, बट वॉल्यूम्स बढ़ रहे थे क्योंकि 3 वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही, हाँ। बढ़ेगा ही। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर इज ग्रोइंग, Growing but it is not devoid of the challenges, inherent challenges। एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम्स हैं, बट आउटपुट तो इंक्रीज हो रहा है ना। हाँ सर, आउटपुट इंक्रीज पर ईयर इट इज इंक्रीजिंग। तो सर प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज और लैंड, हाँ बिल्कुल, तो लैंड का साइज आपका कांस्टेंट है, जो आपका जो लैंड अंडर कल्टीवेशन, नेट शोन एरिया तो वही है, या शोन एरिया जो कह रहे हैं आप वो उतना हाँ ही वो तो है। ये है, वो तो लेकिन आउटपुट बढ़ रहा है तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ ही रही है, लेकिन Right, sir. बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ठीक है, कहीं कहीं कांस्टेंट है, माइंड है हाँ। किसी ईयर में। सो सर दिस प्रेजेंटेशन को ठीक करने के लिए व्हाट शुड आई डू? हमारे पास सब कुछ है, जो पिछली बार जैसे ही किया था ना, पिछले बार जैसे क्यों बस। ओके सर। तुम्हारे पास देखो मटेरियल वाइज एकदम ठीक हो, बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, और हम लोग राइट फ्रॉम द फर्स्ट इंटरव्यू वी हैव बीन टेलिंग, होता है किसी दिन ना ठीक नहीं होता, तुम 10 चीज सोच के आए हो, हाँ, या सर। तुम्हारे जैसे लास्ट टाइम दिया था तुमने ना, उसी तरह से करना रिपीट, दैट्स ऑल। ओके सर। एक्सीलेंट था लास्ट टाइम। ओके थोड़ा सर। सा वो लग रहा है तुम सोच रहे हो, बहुत मल्टी चीज सोच रहे हो, थोड़ा सा स्ट्रेस आउट टाइप से लग रहा है हल्का चेहरा। हाँ सर हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा जल्दी डेट आ रही है पास, तो थोड़ा सा हो सकता है कि नहीं, उसमें घबराना ही नहीं है, तुम सब कुछ अच्छा, यू विल क्वालिफाई, देयर इज नो डाउट दैट यू विल नॉट क्वालिफाई, कोई डाउट ही नहीं है। थोड़ा सा पर्सनालिटी को प्लेजेंट बनाओ, हाँ, लीडर के सामने प्रैक्टिस, और जो तैयारी का पैटर्न आपका है, जो सोर्सेज यूज कर रहे हो, न्यूज़पेपर, अदर सोर्सेज, कीप इट अप। ओके सर। बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं करो, डिबेट नहीं करना बस, ओके सर। अब नैरो डाउन करके चलो, अपना छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया बस। हाँ ओके सर। एंड मुझे जो ये जो सिलेबस जो था उसमें सर उसको रिवीजन थोड़ा सा करते रहना चाहिए। हल्का सा कर लेना चाहिए, हल्का सा, हाँ सुपरफिशियली, सुपरफिशियल, ताकि वो डेप्थ में कोई नहीं जाएगा। डेप्थ में Okay. कोई नहीं जाता। एंड सर वो हैरिट डोमर मॉडल का वो मेरे को नहीं आता था वो आंसर उसका। नहीं सही तो बोला तुम, कैपिटल से हाँ, तुम उतना ही जरूरत है। उसको यही बोलना कि सेविंग कांस्टेंट है और कैपिटल आउटपुट रेशियो का। ऑब्वियसली जो सेविंग आउटपुट है एक्चुअली हमेशा प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में ही होता है। सेविंग तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, गिर ही रहा है, वो होता है इन्फ्लेशन की वजह से आदमी पैसा नहीं बचा रहा है। हाँ राइट सर। लेकिन नेगेटिव तो बहुत नहीं बोल रहा है, वो तो ठीक है। इन्होंने हैरिट डोमर सवाल पूछ दिया, आपको सुपरफिशियल पता कोई जरूरत उसी नहीं। से कनेक्टेड है आपका जो इंडियन प्लानिंग सिस्टम है, सेकंड 5 ईयर प्लान में नेहरू मालनोबिस मॉडल, फेल्डमैन मॉडल जो है आपका, उसको ये करके आपको जो हैरोल्ड पर डिपेंड था उसको फेल्डमैन को इम्प्रूव करके यहाँ मॉडल बना, इसीलिए तो सोचता हूँ ठीक है। ठीक है सर। सर प्रेजेंटेबल बनाने के लिए थोड़ा एग्जैक्टली सर मेंटल डेविएशन तो समझ में आ गया, रीजन ये है, तो वही मेन रीजन है बेटा, तुम उसी से स्ट्रेस हो रहे हो। पिछली बार जो था तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ तो वो हो सकता है कि सोच रहे हो 4-5 चीजें एक साथ चल रही है, वो चेहरे से रिफ्लेक्ट जाती है। अक्सर सर उसके क्या करूँ सर उसके लिए कुछ मत करो, सोचना बंद करो, खुश होके जाओ, तुम अपने आप में विश्वास पैदा करो कि यू विल क्वालिफाई। ओके सर। ओके ठीक है सर। बोर्ड जब अंदर बोर्ड में घुसोगे ना, तो 5-10 मिनट पहले से डीप ब्रीदिंग कराते हैं सर। ओके सर। डीप ब्रीदिंग और कुछ सोचना कुछ भी नहीं है, एंड सर सीधा सोचो कि एकदम हम पाता है। ओके कह सर। तो रहे हैं कि यू नो थिंग्स, तुम में भी अपने आप में विश्वास पैदा करो, यू नो थिंग्स। ओके। कोई जरूरी नहीं है कि उस दिन भी सब सवाल का जवाब ही दे ही दो, इट्स नॉट नेसेसरी। राइट सर। लेकिन यू डोंट हैव टू बी लो, ठीक है, हमारा रिटर्न है ये है, हमें यही आता है। एंड सर मैं एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हो रहा है कि मेरे साथ एक पॉइंट ऐसा हो रहा है जिसमें मैं थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट कर जाता हूँ।
या तो खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ या आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और उस पर मैं अच्छा आर्गूमेंट नहीं दे पा रहा हूँ। तो सर मतलब ये एक प्रॉब्लम है जो मैंने नोटिस करी है कि लास्ट टाइम जैसे आपने उसका बोला था कि कैपिटल इनफ्लो होंगे, तो जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे लगा कि मैं गलत बोल रहा था, मैं गलत चीज़ पे पॉइंट कर रहा था। तो और आज भी जो हो ही गया यील्ड पे भी, तो सर उसकी वजह से भी थोड़ा दिमाग में वो पॉइंट चल रहा है। तो नहीं अच्छा, सोचना ही नहीं है ना, वो उस दिन का चीज था, मामला था, ऐसा थोड़ी उसके आगे सरेंडर कर दो, डोंट एंटर इनटू द आर्गुमेंट। ओके सर। अगर आपको कहीं फील हो गया कि आई एम गोइंग रॉन्ग, तो आप एक बार से अपोलॉजी करके उसको ड्रॉप करवा। ओके सर। सो दैट द बोर्ड मेंबर आस्क इंटरेस्टेड टू अनदर क्वेश्चन। ओके ओके, उसको वहीं स्टॉप कर दो। ओके सर। अपोलॉजी करके, ओके सर। सॉरी सर, आई वुड गो थ्रू दिस कॉन्सेप्ट वंस अगेन। ओके आई सर। विल रीड मोर अबाउट इट। ओके सर। एक दो तरीका से करके। ओके सर। ओके ओके सर। ठीक है, तो यू फील रिलैक्स्ड। ये नहीं करना है कि जबरदस्ती कोई गलत पॉइंट है भी फिर भी हम उसको अपने तरीके से प्रूव करने की कोशिश करते हैं, क्रिएट हाँ एग्जैक्टली सर। कोई ड्रॉप। एंड इफ अगर मैंने मेंशन कर दिया कि यील्ड बढ़ रही है और तब भी मैं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, तो आई थिंक वो भी नेगेटिव पॉइंट ही है। ओके सर। एंड सर लास्ट थिंग, बैठने का एक तरीका ठीक है। मैं आज फॉर्मल में थोड़ा आया हूँ, मेरा ब्लेजर अभी रेडी नहीं हुआ है। वो सब ठीक है सर। एकदम एक ही मंत्र है, यू मस्ट हैव अ फेथ दैट यू नो थिंग्स। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। एंड सर उस पर कुछ करना है, उस वाले पे प्रोफेसर वाले पे सर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लीगल जाना चाहिए सर मुझे उस अभी नहीं, अभी पहले अपने इंटरव्यू दे करके इसको। वो तो सर 30 को लास्ट डेट है, फिर वो तो बंद वो कर। गलती उनकी होगी तो उनको सुधार करना पड़ेगा सर वो तो किसी और को बुला लेंगे फिर अगले वीक 1 दिसंबर को। वो जो उनको करना पड़ेगा। अगर आप लीगली सही हो तो लीगल रेमेडी कभी भी मिल सकता है। ओके सर। आप बीच में ड्रॉप मत करना, यू कंटिन्यू कॉरेस्पॉन्डेंस विद देम। ओके And if they do not give you the chance, it is not your fault, it is their chance. Okay. Fault. They will, the onus lies on them to rectify their mistakes. राइट सर, ठीक है सर। ठीक है, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करो इंटर करने के पहले। हाँ सर, मैं मेडिटेशन थोड़ा सोच रहा हूँ क्योंकि ठीक रहेगा, क्योंकि पिछले 4-5 दिन सर थोड़े मेरे लिए हैवी रहे हैं, तो थोड़े से भी हो सकता है। सिंपल तरीका है डीप ब्रीदिंग करवाने के पहले, 5-7 मिनट ज़्यादा नहीं। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। और बाकी कोई गड़बड़ नहीं है यार, हो जाएगा। ओके सर।